Hello everyone, welcome to Apti Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So the USP of this initiative is that I'll try to cover the news that is most important and will cover it in a simple manner so that it is understandable to you, and that is going to help in the prelims and mains examination. Additionally, I'll be supplementing with the content so that they can help in the further part of the examination. So let's get started with the topic first. So today is 20th of January and these are the list of the topic for the day. The first topic is military specialists to get S-400 training. The second important topic is budget sessions to have a question hour because this was being cancelled due to the COVID-19. The third topic is India to fly out the vaccines for the neighbor countries as a neighborhood first policy. The second last topic is report of independent pandemic reviews panel with regards to the functionings of WHO and the leniency approach that was there from the China. And the last topic is RERA and interest for the home buyer. This is an editorial. Apart from this, I'll be also discussing some MCQs question at the end of this session. Also the explanation of yesterday question. So stay tuned till end of this session so that you could practice some important questions for upcoming prelims examination. So let's get started with the first news, that is military specialists to get S-400 training, right? So we are hiring S-400 from Moscow, and this is an important topic for your general studies paper 3, can be very significant there. And at the same time, S-400 Triumph is again very much relevant for PT examination. So as India prepared to receive the first batch of S-400 long range surface system, this is by end of this year. So the first group of Indian military specialists are scheduled to depart to Russia, that is the capital in Moscow. They will be going to Moscow to have a training and the course regarding the S-400 Triumph, right? So this is a missile system. This is the most advanced missile system in the world that India would be getting very soon, and it would be augmenting the overall capacity of India in terms of air defense system. बात करें अगर इंडिया की जो पूरी डील हुई है एयर डिफेंस जो S-400 को लेकर के जो साइन की गई है एग्रीमेंट, सो दिस कॉस्ट इंडिया अराउंड $5.43 billion with Russia, right? And the S-4 Triumph supplies India as one of the flagship project for the Indian Russia militaryship, और जो military technical cooperations है खास करके इंडिया और रशिया के बीच में, that would be further going to augment. And in terms of relationship between India and Russia, we always have a healthy relationship with Russians. Now coming to the other news, other section, that is S-400 Triumph. ये है क्या, इसके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है because anything can be important here from the prelim section. They can ask you anything from this section. So Triumph is one of the world most advanced air defense system, और ये सिस्टम अपने आप में बहुत ही बड़ी एक कॉम्प्लेक्स लार्ज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स होगी, इसमें रडार सिस्टम्स में यूज़ किए जाएंगे, एंड दिस वुड ऑल्सो हैव द कंट्रोल सिस्टम विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल. सो आई विल शो यू अ इमेज, दे कैन हेल्प यू टू फिगर इट आउट. सो दिस इज द S-400 Triumph, which is considered to be the world most advanced version, right, of air defense missile system, and this is coming to India. For that, Russia is organizing a training system for Indian military personnel. Now coming to the other point, that it can simultaneously track numerous incoming object in the radius within 100 kilometers, और जो objects होगी they may include aircraft, missiles and UAV. So this can directly attack to these part of things. Now it can also appropriately have missile system to launch and counter attack to neutralize the objects. So ये कुछ इसके advancement है in terms of S-400 Triumphs, and the system has potential of ensuring high success rate. So success rate is very high, the accuracy is very high. So definitely the involvement of S-400 Triumph in Indian Army would be augmenting the relationship with Russia, and also it would be boosting our cooperations. It would be giving the strength to the overall defense security in India, right? Now India Russia military cooperations की अगर बात करें तो presently India और Russia have deep involvement in the joint deployment and production of the military equipments, components, spare parts, जितने भी technology sharings हैं, चाहे वो improving हो in terms of sales and services system, we have established a good relationship with Russia.
एंड इन अक्टूबर 2018 ओनली इंडिया हैज साइन दिस एग्रीमेंट। जो S-400 ट्रायम्फ है, इसकी एग्रीमेंट 2018 में साइन की गई थी। मैंने आपको अमाउंट बता दिया, इट्स $5.43 बिलियन। दिस अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए सिर्फ ये ईयर इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने एग्जाम में ईयर भी लिख दिया है तो वो भी बहुत काफ़ी है। नाउ डिस्पाइट द ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द यूएस, जब ये एग्रीमेंट हुई थी तो यूएस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा थ्रेट आई थी। थ्रेट आई मीन्स बाय बायलैटरल थ्रेट वाज फ्रॉम द अमेरिका दैट दे वुड बी सैंक्शनिंग इंडिया अंडर द काउंटर अमेरिकन एडवर्सिटीज थ्रू सैंक्शन सेट्स, काटसा जिसको कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपके लिए काटसा के बारे में जानना भी ज़रूरी है। सो व्हाट इज काटसा? इट इज काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सिटीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो ये एक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स की, यूएस की, एक फेडरल लॉ है जो इम्पोज करती है सैंक्शन ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया पे। तो कोई भी कंट्री जो इन कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है और जिसकी रिलेशनशिप यूएस के साथ अच्छी है, उन कंट्रीज पे अगर हो तो यूएस चाहे तो उसमें सैंक्शन लगा सकती है। Now it include the sanction against the country that are engaged in a significant transaction with Russia's defense and intelligence sectors. तो इंडिया ऑलरेडी हैड अ गुड रिलेशनशिप और हमने S-4 ट्रायम्फ के लिए अपने जो डिफेंस डील्स हैं वो रशिया के साथ किए हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये इम्पैक्ट हुई कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी खास करके इंडिया और रशिया के बीच में, उसका रिपरकशन जो इम्पैक्ट है वो इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में देख सकते हैं और यूएस इंडिया को सैंक्शन कर सकता है। Now, India could face US sanction for the purchase of high-value military defense items from Russia under this act. So, काटसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी। S-400 ट्रायम्फ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या दोनों से इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। So, this can be again important for the mains examination. So, if they ask a question in mains, you can write these points. Now coming to the other news, that is budget session to have the questions. Budget session to have the questions are what things that are coming in the budget session, because question R is something which is very important, right? So this is important for your general studies paper 2, and questions R concept is again relevant for the prelims examination. Many times UPSC tend to ask a concept on this type. Now, as we all know that because of the pandemic, the question hour was suspended in the monsoon session and it is going to be resumed in the coming budget session. The government has clarified that they would be coming up with the question hour in the budget session, which is scheduled to be start from 29th of January 2021. And it was suspended in the monsoon session because of the COVID-19 precautionary measures. बहुत सारे देखे गए हैं रिपोर्ट्स ऐसे आए थे, न्यूज़ में आपने भी सुना होगा कि many MPs were infected. So because of, in light of that, the question hour is being suspended. So the Lok Sabha speaker has said that the question hour would be allowed and in the during the parliament session, the coming budget session, and it will be fixed for an hour. So एक hour के लिए ये fixed होगा where the person can raise their questions, right? Now the other part, what is question hour? Because it is very important for you to know what is question hour. So discussing question hour होता क्या, जो member of parliament होते हैं, they can ask questions to minister and hold them accountable for their functions and their ministries. And question can be asked to the private member who are not the minister also, right? Now the question is regulated according to the parliamentary rules. जो parliamentary rules होते हैं उनके अंदर ही पूछा जा सकता है। और जो presiding officers होते हैं, both for the Raj Sabha and the Lok Sabha have the final authority with respect to the conduct of question hour. So this can be a very possible question they can ask you कि जो authority है वो किसके अंदर lie करती है। Many times UPSC tend to give the options of president or any other people. So it is the presiding officer who has authority to conduct the questions hour. Now type of questions, कितने तरह के questions, कितने variety के questions पूछे जा सकते हैं. So there are basically 3 types of question. First is starred, second is unstarred, and third is short notice question. तो starred क्या होता है? This is being अगर बात करें ये require होती है oral answer देने के लिए और इसमें supplementary question follow किए जा सकते हैं, right? This is orally answer and supplementary can follow. Unstarred का मतलब होता है it required a written answer. एक written answer आप देंगे उसमें, the minister is accountable to give the answer in writing and supplementary cannot follow here, right? Short notice क्या होती है? Short notice is a type that is asked by given not notice of less than 10 days and it can be answered orally, right? So these are the 3 types of question that is being asked in the question hour.
नाउ सेशंस रखी गई हैं, कुछ टाइम ड्यूरेशंस बाइफर्केट किए गए कि व्हाट इज द टाइमिंग दैट वुड बी देयर फॉर द कंडक्ट ऑफ द बजट सेशन. तो राज्यसभा के लिए द टाइमिंग इज फ्रॉम 9 AM to 2 PM एंड लोकसभा वुड बी टेकिंग फ्रॉम 4 PM to 8 PM. एंड द जो गैप रखी गई है दोनों सेशन के बीच में इज टू सैनिटाइज द एरिया. So this is what has been reported in the newspaper. Not that relevant for you, but I'm just telling you. The parliamentary जो parliamentarians होंगे उनको 3 चैम्बर में allocate किया जाएगा because of the COVID-19 social distancing को देखते हुए there would be 3 buildings that would be allocated for the members, and the MP would have to undergo the COVID-19 test. Before the budget session, before making into the entry, they definitely need to get into the COVID test. And the Lok Sabha speaker have said that arrangement has also been made for the RT-PCR test, and this would be mandatory for all MPs and ministers. Now critics by the opposition because of the question hours not being followed. So ये opposition ने कहा था कि जो suspension है question hour की ये strongly democracy के खिलाफ है, and this is what the opposition has said. And question hour gives an opportunity to the oppositions to hold government accountable, because अगर आप किसी सवाल पे questions नहीं पूछ पा रहे गवर्नमेंट से, so you are not holding government accountable. So accountability promote करने के लिए question hour is very important in a democracy like India. Now the other topic is India to fly out vaccines to the neighbors. So as a part of the goodwill gestures and neighborhood first policy, India is looking forward to give the vaccination to our neighboring countries. So this is important for your general studies paper 2, and specifically it would be important for the IR section. So in a recent decision, the government of India has decided to ship out lakh doses of the novel coronavirus vaccine to the neighboring countries. And the first batches hai, that would be reaching out to Bhutan, Maldives and several other countries by a special plane as a grant or gift to the countries. Now, beneficiaries countries की अगर बात करें, who among the beneficiary countries would be? So, as a part of India's neighborhood first policy, India is making efforts कि जो भी हमारे कोविड-19 जो साउथ एशिया कंट्रीज में है उन लोगों को बेनिफिट दी जाए, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मूव अहेड ऑफ चाइना बिकॉज चाइना इज नॉट सपोर्टिंग एनी अदर कंट्रीज एज सच. सो इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है. सो the official confirmation coming from Ministry of External Affairs they would be shipping the vaccines to Bhutan, Maldives, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Seychelles, right? These are the important countries. Initially they would be getting the vaccine from this week onwards. और अगर बात करें उसके अलावा जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है लाइक श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरिशस, सो इनके लिए अभी रेगुलेटरी अप्रूवल पेंडिंग है. वंस द रेगुलेटरी अप्रूवल गॉट फाइनलाइज्ड देन दीज कंट्री वुड बी आल्सो गेटिंग द वैक्सीन्स. Now, according to the authorities, जो इंडियन अथॉरिटीज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ना ही कोई रिक्वेस्ट की है अभी तक वैक्सीन को लेकर के, और इंडिया ने इसको देने के लिए भी ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया बिकॉज पाकिस्तान इज अ कंट्री विच हैज़ प्रमोटेड टेरर अ लॉट अगेंस्ट इंडिया. एंड आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान की वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए सो इट वुड बी गेटिंग वैक्सीन फ्रॉम चाइना. वी आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ दैट. So what is your view on that? So do write your views on the comment section. आप बताएं कि पाकिस्तान को कौन सी कंट्री आपको लगता है जो वैक्सीन प्रमोट करवा सकती है, right? So do share your views. Now talking about the other part that is calling the shots. This is infographic that will help you understand कि कौन-कौन countries में हमने vaccinations की बात की है. अफगानिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, भूटान and बांग्लादेश, right? So these are the countries' population which is mentioned here, and accordingly the first batches is going. So for Bangladesh, the largest number of shipment is going, that is 20 lakh doses we are sending to Bangladesh, right? So this is there in the newspaper also. You can read out there as well. Now coming to the affordability of the vaccines, because India vaccine is completely affordable compared to other sections of the country. So COVID sheet जो कि Serum Institute of India ने बनाया, this is being developed by the Oxford Universities and AstraZeneca. This is the first vaccine and the second vaccine is Covaxin. So दोनों vaccines की जो affordability है वो काफ़ी
अच्छी है, दैट इज नो दे आर नॉट ऑन द हायर साइड, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है। एंड इंडिया इज डीपली ऑनर्ड टू हैव अ लॉन्ग ट्रस्टेड पार्टनर in meeting the healthcare needs of the global community, right? And talking about the Serum Institute of India, these are the world largest vaccine manufacturer, खास करके पीडियाट्रिक्स में इनकी वैक्सीन वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट देयर वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन जितने बच्चों की है उसमें 70% जो वैक्सीनेशन होती है वो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डेवलप करती है। सो वेरी बिग कंपनी एंड वेरी ट्रस्टेड कंपनी, राइट? Now coming to the other news, that is a report of independent pandemic review panel. This is there in the Indian Express, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिकॉज चाइना की जिस तरह से इसमें एलिज किया गया है इंडिपेंडेंट रिपोर्ट में कि चाइना ने काफ़ी चीज़ों को डिले की थी। सो दिस कैन बी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2 IR के सेक्शन में। कहीं आप दो सेक्शन के क्वेश्चंस में इसको लिख सकते हैं, डायरेक्टली से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, right? An independent panel has said that Chinese official could have applied public health measures and forcefully in January to curb the initial COVID-19 outbreak. तो जब जनवरी में इनफैक्ट इन चाइना द रिपोर्टेड केसेस वर फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स, तो दिसंबर के टाइम से जब भी केसेस रिपोर्ट किए गए थे उस टाइम में भी अगर वो चाहते तो उनको बताया जा सकता था, they could make people aware that actually this is going, but China has somewhere make possible to hide the news. तो पैनल ने ये भी कहा है कि they have also criticized the World Health Organization for not declaring an international emergency until Jan 30. This is like 2020. उस समय तक WHO ने भी इसको पेंडेमिक नहीं करार दिया था, और जिस वजह से जो लीनियंसी अप्रोच जो रही थी उसकी वजह से बहुत कंट्री में ये आउटरीच ऑलरेडी हो चुकी थी और द पेंडेमिक हैज टेकन द शेप। नाउ द एक्सपर्ट ऑफ द व्यू की जो ग्लोबल हैंडलिंग हुई है पेंडेमिक, इसमें कुछ जो एक्सपर्ट थे वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, लाइबेरियन प्राइम मिनिस्टर, दे वर द पार्ट ऑफ द जेनीवा बेस्ड नेशनल एजेंसीज, और इनके मुताबिक जो रिपोर्ट आई है दे सेड कि WHO की जो टॉप इमरजेंसी एक्सपर्ट है उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो ग्लोबली पर वीक जो डेथ हुई थी दैट वाज अमाउंटिंग टू 1 लाख डेथ पर वीक, right? So this is a severe case that was going at that point of time. And talking about the observation of the panel, so the panel is of the opinion that public health measures could have been applied more carefully, right? जो national authorities थी खास करके चाइना में, वो अगर चाहते तो WHO को रिपोर्ट की जा सकती थी और पूरे वर्ल्ड वाइड इसको अवेयर करना पहले से, इफ दे वांट दे कुड मेक इट पॉसिबल दैट एवरी कंट्री इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अ वायरस आउटब्रेक हैज टेकन प्लेस इन चाइना। बट इट इज एविडेंट कि जो इमरजेंट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है दैट हैज ऑलरेडी बीन इग्नोर्ड बाय चाइना। एंड इट हैज़ ऑल्सो सेड दैट WHO की जो इमरजेंसी कमेटी है वो भी उन्होंने भी काफ़ी डिले किया इस चीज़ को पेंडेमिक डिक्लेयर करने के लिए, और जब तक इंटरनेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती बाय जनवरी 30, 2020 वी ऑलरेडी हैड अ इन्फेक्शन, इंडिया ऑलरेडी हैड द केसेस ऑफ द COVID-19 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Now call for a global reset. So the committee said there need to have a global reset and they could make a recommendation on the final report once the report is going to be submitted in May with the signature of 194 WHO member countries. और बात करेगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, so they have already accused WHO as a China centric because these allegations has already get और US ने जितने भी जो फंड्स जो ये देते थे उनको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया फॉर द WHO। और यूरोपियन कंट्रीज लेड बाय फ्रांस, जर्मनी हैव ऑल्सो पुश्ड एड्रेस फॉर द WHO शॉर्टकमिंग ऑन द फर्दर गवर्नेंस एंड लीगल पावर। So definitely a revamping of WHO is also required because the chairman is considered to be on the centric side of the China. So let's see how this is going to revamp, whether the presidentship is going to continue for him or there would be the change in the chairmanship, right? Now coming to the other news, this is an editorial. This talks about RERA and the interest of the home buyer. The editorial has been reported in the Indian Express, and this has been written by Hardeep S. Puri. He himself is a minister of the urban development. So he talks about how RERA can transform. So in this editorial, I'll be looking about more into RERA, what are the advantages and what are the way forward, right? So this editorial has been written by a minister who is already in the present government. So he has mostly talks a lot about the government. तो इस तरह के जो editorial होते हैं वो government को ज़्यादातर praise करते हैं. So we will be having a neutral view और जो इसके aspects हैं we'll see that. तो exam perspective से जो चीज़ें important है we'll make sure कि हम उन चीज़ों को discuss करें.
So RERA has infused governance in the unregulated sector. As you know that this was a big achievement for the country like India कि इस तरह की जो regulation आई थी. So this is इससे पहले अगर बात करें तो रियल स्टेट एंड डेवलपमेंट एक्ट जो है रेरा दैट हैज इन्फ्यूज गवर्नेंस इनटू द अनरेगुलेटेड सेक्टर. और जो ये एक्ट दैट स्टिपुलेट कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट जो है दैट वुड बी नो सोल्ड विदाउट द क्लियरेंस दैट इज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, राइट. इससे पहले रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा इरेगुलेशंस होती थी क्योंकि लोगों से ऑलमोस्ट 70% तक अमाउंट ले लिए जाते थे, 80% तक अमाउंट ले जाती थी और उनको जो एक्चुअल पोजीशंस होती थी घर की नहीं मिलती थी. तो इसमें कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं कि कॉर्पस अमाउंट रखा जाएगा अलग. अगर प्रोजेक्ट बिल्डर्स घर नहीं बना पाए तो इतने अमाउंट रखे जाएंगे कि जो भी आपने डाउन पेमेंट लिया हुआ है वो वापस करिए जा सके, राइट. सो दिस एंड द प्रोजेक्ट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी. हर स्टेट की अपनी रेरा बनेगी. एंड द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग एंड द बेसिक डिटेक्टफुल एडवर्टीजमेंट, किस तरह की जो फेक एडवर्टीजमेंट्स होती हैं कि एक्चुअल साइट्स के इमेजेस लगा दिए जाते हैं, इस तरह की चीज़ों में अगर कोई भी कंपनी पाएगी तो दे वुड बी अकॉर्डिंगली पिनलाइज्ड. Now provisions of the separate bank account, because as I've told you in the beginning कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे डाउन पेमेंट लिया जाता था. The amount can sum up to 60% to 80%. So this was a down payment which was being asked to make with the buyers. तो promoters are required to maintain the project based separate bank account to prevent the fund of divergence, right. कोई फंड को डाइवर्ट ना किया जाए उसके लिए सेपरेट बैंक अकाउंट बनाने की बात की गई है. एंड द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वल रेट ऑफ द इंटरेस्ट by the promoters or the buyer in case of default reinforce equity. Now these are also many other provisions that have empowered consumers, rectifying the power asymmetry and prevalent sector. We have already seen unauthorizations in terms of the real estate. So ये इस तरह के जब बैंक अकाउंट्स बनाए जाएंगे तो मोस्टली जो बायर्स होंगे उनके अमाउंट जो कॉर्पस उन्होंने जमा किए they would be always kept on a safer side. Now talking about the objective of RERA, this is relevant for the exam perspective. इस वजह से मैंने इसको objective को लिया है. So first and foremost objective is to enhance the transparency and accountability in the real estate in the housing transactions, boost domestic and foreign investment in the real estate sectors. और ये एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बनाएगी. देयर इट वुड इंश्योर द स्पीडी एडजुडिकेशंस ऑफ एनी डिस्प्यूट दैट इज कमिंग फ्रॉम इट, राइट. एंड इट वुड ऑल्सो प्रमोट जिस तरह से एफिशिएंट प्रोजेक्ट होगी, एग्जीक्यूशंस हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो, उसको प्रमोट करने के लिए. एंड ऑफर अ सिंगल विंडो सिस्टम ऑफ क्लियरेंस फॉर द रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स and empower and protect the right of the home buyers. So protection of the home buyer and their interest and their money is very important at this point of time. Now what is the way forward? Provisions for punishing for the violations should be kept in all states of the law, क्योंकि हर states में अपनी रेरा बनाई जाएगी. And the state authority definitely need to take concrete actions if any malfunctioning is there. And the state should be fully authorized to implement RERA to curb the black money. और जो गवर्नमेंट एजेंसीज होगी दैट वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर डिले इन एनी काइंड ऑफ ग्रांटिंग और अप्रूवल्स. बात करें अगर रोबोस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, दैट नीड टू बी डेवलप्ड टू एस्टैब्लिश अ मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट एंड क्विकर रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवांसेस. क्योंकि जो भी होम बायर्स हैं उनके ग्रीवांसेस है दैट हैज टू बी गिवन अ प्रॉपर रेजोल्यूशन बाय द गवर्नमेंट कंसिडरिंग द फैक्ट कि रेरा की जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी अच्छे से हो रही है. Now all the concerns on developers should be addressed in the time bound manner and avoid unnecessary legislation by the in the courts, right. So what has happened, like वो जो केसेस है वो कोर्ट में चले जाते थे एंड स्टे पेंडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जो बायर्स के जो फंड थे उनको किसी और जगह पे इन्वेस्ट करके जो फंड कंपनीज थी या फिर जो रियल एस्टेट की जो बिल्डर्स थे वो अपने पैसे बनाते रहते थे, राइट. सो दिस आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड दैट इज वेरी नेसेसरी दैट यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन. Now coming to the answers of yesterday questions. So the first question, the correct option here is A, that the AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome, is caused by the virus called HIV, and the disease offers or alter the immune system, making people more vulnerable to infections and diseases. So class 12 की जो biology की NCERT है, because many time UPSC tend to ask a question on general science as well. So the second question for the correct option here is B, that Chabahar port lies in the Gulf of Oman, and the port of Chabahar is located in the Moroccan coast in the Sistan Baluchistan province next to the Oman and mouth of Strait of the Hormuz, right. So this is there from the Hindu. Many of time this news has been reported, so you can take reference from there as well.
Now, coming to the MCQs question of the day, the first question is from General Science with regards to a GSLV Mark III. Consider the following statement. It is a three-stage heavy lift launch vehicle developed by ISRO, and this is India's first fully functional rocket to be tested with the cryogenic engine. So, which among the following is the correct option? A, B, C, or D? You can just let us know in the comment section down below. Coming to the second question from Indian Polity, consider the following statement with regards to the preamble of the Constitution. The 44th Constitutional Amendment Act added the new words socialist, secular, and integrity. The preamble of the Indian Constitution is based on the objective resolution by the Pandit Nehru. So these are the two independent statements and in important questions that can be asked in the examination. So do participate, write your answer in the comment section down below. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up and share the video with your friends and your near and dear ones so that they can also get benefited of this video. And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.